require as much capital as it used to involve in the traditional industrial revolution, where large corporations had monopoly on these means of production. So one opportunity for countries like Pakistan is that how fast can we acquire these technologies and how can we put them to use for economic development of the country. And who will do it? And I always say that for me, two things have to be populated and put to 24/7 use: libraries and laboratories. If you today go to a good university in Europe or America, you go to Harvard, Stanford, MIT, Penn, Chicago or whatever, Princeton or Cambridge or Oxford or any other good university, if you happen to pass by their labs and libraries at midnight, you will find the window panels full of light. The libraries and the laboratories do not shut down with office hours. And the dilemma of developing world is that our libraries and laboratories work on office hours. So working on office hours in laboratories and libraries does not give you breakthroughs. So these two places have to be populated with people who have passion to break the frontiers of knowledge, who are driven by zeal that they will solve the unsolved puzzles and mysteries for mankind and develop new ideas, new solutions, and put them to use for the benefit of mankind. So I think National Center for Physics is our home for very advanced research. And if the other lesson of history which we also see is that almost every advanced technology has taken birth in defense-related research. Name any technology, probably every technology will have its birth in the domain of security or defense. But the success of successful countries have come that once they acquired any technology, they were able to commercialize that technology for the good of the whole society. Internet came from defense application, but look how internet technology has transformed the whole economic landscape. Similarly, any technology, if you see, for example, space technology, it all started as a very strategic investment by whether NASA or European Space Agency, and had maybe some security dimension to it, that they wanted to monopolize the sky with their satellites and use them for different means besides economic use, for military use. But now look at the space technology. It is becoming a commercial venture. What SpaceX is doing, very soon we are going to see space tourism taking place. So my point is that the challenge for researchers is, no matter whether you are in agriculture sector, you are in industrial or manufacturing sector, or you happen to do research for any defense project, the ultimate success is that how fast can we take that research into civil application, commercial application, and create economic value out of this research. So therefore, we are now starting a new initiative which we call Science, Technology and Engineering for Development. Over the past couple of years, decades rather, we have invested billions of rupees in our higher education sector, in building centers of excellence. I mean, you just heard in 2016-17 we gave this 3D printing technology and many other areas, National Center for Applied Mathematics, and some other projects to National Center for Physics. Likewise, we set up in 17 National Center for Artificial Intelligence. I hope now we have to upgrade it to National Center for Generative Artificial Intelligence.
National Center for Cyber Security, National Center for New Manufacturing, Automation and Robotics, National Center for Big Data Cloud Computing, National Center for Space and GIS Satellite and GIS Applications, National Center for Genomics. You know, there was a whole range of these centers that we set up, and some of them have done really splendid work. But now, not just these centers, but the human resource that we started to develop. In 1998, under Vision 2010, we approved at that time 5,000 scholarships for overseas researchers, overseas scholarship scheme, 5,000 PhD scholarships for local universities. As a result, now, mashallah, we have thousands of researchers who have gotten their education in good universities abroad or in local universities, and now they are available. But does that investment only mean that they should just be classroom teachers? They should just lecture in their classrooms? Or should do some basic elementary research work in their labs, which probably can enable any researcher to have one major impact factor journal publication? Is that the whole purpose of that investment? No. The purpose of this investment was to develop science, technology and engineering capability of the country so that we could develop into an advanced economy, a techno economy, an economy which is fueled by the power of technology for the good of the people. So that is the missing link. And that is why the new framework we have for Higher Education Department or Higher Education Commission, that each and every university should be accountable, besides their academic excellence, on what is the quality of research and innovation they produce. How many patents have they internationally registered? And then also, what is the quality of academia and industry linkage? How much are they able to reach out to private sector, to our industry, and offer research, offer solutions? And how much trust industry has on their research capability, that here is a place where we can go and find answers for our problems. So these links now have to be developed. We are now at a point where we have developed these islands of excellence or islands of competencies. But now these islands have to be bridged so that they form a network which can support industrialization of the country, which can support the country to leapfrog on the technology landscape. So I hope this 3D and vacuum technology conference, while it will focus on the disciplines of 3D manufacturing or printing and vacuum technology, this conference will also have some discussion as to how these capabilities can be linked with the larger goal of development of our country. And I hope that the researchers here, all of you, will devote your capabilities, your knowledge towards finding solutions to our problems. We have to go back to history and rediscover that Al-Undalus spirit, where at one time in history, if there were Nobel awards or Nobel prizes, probably 7 out of 10 Nobel prizes would have gone to Muslim scientists who were devoted to research. Why? Because in Quran, God has said again and again, don't you look at the signs of the Lord in the universe. Use your eyes to observe and use your mind to reflect and find answers. How was this universe created? How days and night come, how moon and stars move, how stars are floating in the universe. You know, there is a call for action, that look at the signs of the Lord in universe, how plants grow, how ships float on the sea, how rain comes, how clouds are formed. You know, there are all calls, and then try to find answers that why is it happening. As long as, you know,
we were responding to this call, we were doing research, we were investigating the puzzles and mysteries of universe, we were leading the way. But when we became copycats, just cut and paste knowledge followers, theory of cut and paste knowledge, we adopted. After that, we went on a downward slide. And today you see what is happening. There's just 10 million people who are carrying out genocide, and 2 billion plus people are helpless. Nobody can stop them. And the whole West is hostage to that just 10 million people. The brutality you see in Palestine, Gaza, the genocide, the way it is happening, everything is today so clear that all those values that West used to teach us, human rights, respect for children, respect for women, they have shut their eyes and they have given a license to kill to Israel. On what authority? It is only the power of knowledge that Israel has, and has made those countries, helpless. They can't even stop him. So it is the power of knowledge, ladies and gentlemen, that matters today in the world. So we all have to find answers in developing our knowledge capabilities and leading the way for not only our own benefit, but for the benefit of mankind. And that alone is the way forward to be a nation with dignity and nation with pride. And I hope that our researchers will make us proud in history with their contribution, like you have already made us proud in the mission that we gave you. Pakistan Zindabad. वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल 3D प्रिंटिंग एंड वैक्यूम टेक्नोलॉजी से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी से ख़ुद को मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। साइंस के शोबे में तरक्की के लिए डिजिटलाइजेशन नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि 3D प्रिंटिंग के शोबे में जदीद रुझानात मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल कहते हैं कि हमारे इलाके कुदरती वसाइल से माला माल हैं, अपने ख़ाम माल को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। आलमी मार्केटों में हमारे ख़ाम माल की तलब में इजाफा हो रहा है और हमें मुल्क की माशी मजबूती के लिए ख़ाम माल की बेहतर मार्केटिंग करनी है। तहकीक के शोबे में बेहतरी लाकर नए रुझानात से फ़ायदा उठाया जा सकता है। अहसन इकबाल ने कहा कि हमें अपनी लाइब्रेरियों और लेबॉर्ट्रियों को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करना होगा। नौजवान नस्ल को नए तसव्वुरात पर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दिफा से मुतालिक तहकीक के रुझानात में इजाफा देखने में आ रहा है। ये थी अब तक की PTV ताज़ा तरीन। खुशामदीद नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम रियासत। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास शुरू हुआ, उसके बाद उसमें वक्फा कर दिया गया। 8:30 बजे अब ये इजलास दोबारा शुरू होगा और उम्मीद है कि 12 बजे आज से पहले नए चीफ जस्टिस के नाम की मंजूरी दे दी जाएगी, तजवीज़ कर दिया जाएगा। 3 नाम सीनियर मोस्ट जजेस के ऑलरेडी कमेटी को मिल चुके हैं। उनमें से कौन नया चीफ जस्टिस होगा, इट इज़ टू बी सीन, और थोड़ी देर हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये इस्तेहकाक अब पार्लिमान के या अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास है कि उन्होंने ये तैनाती कैसे करनी है, और उसके साथ साथ जो इस्लाहात की बात बार बार की जा रही थी वो एजेंडा भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अगरचा इसमें यकीनन गुंजाइश बाकी रहती है, लेकिन अभी भी जो कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है, जिसका इजहार आज कौमी असम्बली में वज़ीर इत्तलात ततारा ने भी किया कि 26वीं आईनी तरमीम बड़ी नेक नियति से सलाह मशवरे के बाद और कंसेंसस डेवलप करने के बाद पास की गई। लेकिन एक जमात जिसने पहले तो इस रजामंदी जाहिर की और उसके बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया, जो कि उनका खासा है। लेकिन आज एक और तारीख रकम होने जाएगी जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करेंगे और वो आइंदा 3 साल या जितनी भी उनकी मुद्दत है उसके लिए वो मुंतखब हो जाएंगे एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इस पर गुफ्तगू करते हैं और ये कितना बेहतर होगा हमारे लिए, हमारी पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक, हमारी जमहूरियत के लिए। स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं
हैं साले जाफर साहब, सीनियर तज्जियाकार, बहुत शुक्रिया। सबीन गौरी साहिबा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली, आपका बहुत शुक्रिया। किरण इमरान डार साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कुछ देर में सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। साले जाफर साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। मुलाकात शुरू हो जाएगी दोबारा नशिस्त 8:30 बजे, थोड़ी देर ही उसका इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। जो भी नाम हो, जो भी नाम उसमें से 3 नामों में से पार्लिमानी कमेटी तजवीज़ करती है, असल बात यह है कि अब ये फैसला आवाम के नुमाइंदे करेंगे, कोई शिकवा नहीं रहेगा जैसे पहले होता था कि जी एक इदारा मुदाखलत कर रहा है, अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहा है। कम अज़ कम सियासतदान अब ये शिकवा नहीं कर सकेंगे क्योंकि उन्हीं का तजवीज़ करदा चीफ जस्टिस होगा जो आइंदा सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा और आगे मामला चलाएगा। पहली इतला आपको मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि SIC जो हिज़्ब इख्तिलाफ की रिप्रेजेंटेटिव है नेशनल असम्बली में और सेनेट में PTI है, इन दोनों ने हतमी तौर पे इनकार कर दिया है कि वो इस मीटिंग में जो जिसमें चीफ जस्टिस का नाम फाइनल होना है उसमें हिस्सा नहीं लेगी। इन्हें वे आप कह सकते हैं कि उनके बायकॉट के साथ ये फ़ैसला होगा। उनकी अभी स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब के चेंबर में मुलाकात हुई है, वहाँ गौहर अली साहब तशरीफ़ लाए थे और इसके अलावा 2 या 3 अरकान मौजूद थे कमेटी के, तो वो तफसीली गुफ्तगू हुई तो आखिर पे उन्होंने उससे इनकार कर दिया। अब हैरानगी की बात यह है कि ये 1 टाइमर कमेटी है और इस कमेटी में अगर आपने नहीं जाना था और आपने इसका बायकॉट करना था तो आपने अपने नाम क्यों दिए? अब आपने नाम दिए हैं तो आप इसको अंजाम तक पहुँचाएँ, उनके साथ रहें और फ़ैसले में मुआवनत करें उन लोगों की जो दूसरे वहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इन लोगों पर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ है, ये इनका अदम एतमाद है अवाम के नुमाइंदों पर और अपने रफ़क़ा पर जो पार्लियामेंट में उनके साथ बैठते हैं। आपका सवाल क्या था बुनियादी तौर पर? कि अब पार्लियामान के या अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नए चीफ जस्टिस की तैनाती में सबसे अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो वो जो एक पहले खदशा ज़ाहिर किया जाता था या बार बार बात की जाती थी कि जी एक इदारा तजावुज़ कर रहा है अपने इख्तियारात में या हमारे इख्तियारात में जो है उसको इनक्रोच कर रहा है, तो वो तो अब शिकवा नहीं रहेगा कम अज़ कम। ये बहरहाल शिकवा नहीं रहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने स्पेशल सीट्स का वर्डिक्ट दिया था वो देखा जाए तो ये लोग किसी चीज़ के पाबंद नहीं अपने आप को बनाते, इनमें से कुछ लोग, और वो जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन लोगों का तकर्रुर हुआ है या वो जज बने हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन का मिलिया मेट कर देते हैं। तो लिहाजा आप इस बात की गारंटी नहीं कह दे सकते कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा। नहीं, लेकिन इसमें एक एवेल्यूएशन का भी पार जो है अब पार्लियामान के पास है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कौन सा जज अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। मेरी सुनिए, अगर इसके बावजूद मुदाखलत का उनसर मौजूद रहा तो अब पार्लियामेंट ने आईनी तरमीम का रास्ता देख लिया है। अब जो 27वीं तरमीम आएगी उसमें अगर इसमें कोई खामियां को रह गई होंगी तो वो उनका इजाला हो जाएगा। वेरी राइट। मैं तो रसल ये इस बात का कायल हूँ कि पाकिस्तान में जजों के तकर्रुर के लिए पार्लियामेंट को उसी तरीके से इख्तियारात मिलने चाहिए जिस तरह अमेरिकन कांग्रेस में या ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस तरह से जब जज मुकर्रर होता है तो उसको सबसे पहले एक पैनल के पास जो पार्लियामेंट के लोग हैं, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके सामने पेश हो, जवाब दे। अमेरिका का हवाला दिया ना, मंजर क्या है, सही वो क्या है, क्या करेगा, क्या करता रहा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन होता लाइफ टाइम है, ये भी सोच लें। जी जनाब, होता लाइफ टाइम है, ये भी सोच लें आप। यकीनन लाइफ टाइम होता है, लेकिन इसी वजह से प्रोसेस के बैटिंग के बाद जो है इसी वजह से की जाती है। और क्या खराबी है, क्या बुराई है अगर पाकिस्तान में भी उससे मिलता जुलता वो भी जमहूरियतें हैं और हम भी जमहूरियत होने का दावा करते हैं, तो क्या सबीन गौरी साहिबा, अब आपकी जमात भी उस कमेटी में शामिल है, दीगर जमातों के मेंबरान भी हैं। तीनों जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो सारे के सारे बहुत काबिल हैं और मेरे ख्याल में इक्वली कैपेबल हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर वो फाइज हो सकें। लेकिन कमेटी या आप लोग जो हैं वो क्या चीज़ देखेंगे और किस तरीके से परखेंगे कि हु इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द स्लॉट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया शहजाद रज़ा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये अमेंडमेंट पास हुई है उसके बाद
जो है उससे ये जजेस की जो तैनाती है उसकी ट्रांसपेरेंसी मज़ीद बेहतर हुई है, क्योंकि आप एक प्रोसीजर से गुजर के आ रहे हैं और एक जो कमीशन या कमेटी जो स्पेशल है उसके सामने, जिसमें सेनेट के लोग भी हैं, आपके जो है वो पार्लियामेंटेरियंस, आपके जो है मेंबर्स मौजूद हैं, सीनियर जजेस भी मौजूद हैं, उसमें एडवोकेट मौजूद हैं, फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं। तो इसमें जो सीनियरिटी की बेसिस पे जो आपकी ट्रांसपेरेंसी है मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में जो हमारी सियासत रही है और उसमें जो जजेस का किरदार रहा है, जिस तरीके से जजेस खुद या उनकी फैमिलीज़ या उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं वो इन्फ्लुएंस करते रहे हैं उनके, चाहे वो दोनों तरफ से हो, चाहे वो ट्रेजरी के लिए हो, चाहे वो अपोजिशन के लिए हो ना कहीं बायसनेस जो है वो आ जाती है और उससे जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है, जो हमारा जो जस्टिस है, उसका पूरा एक निज़ाम है जिस पे पूरा मुल्क खड़ा है, वो मुतासर होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि कोई ऐसा कमीशन होता, और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बिल्कुल आप मजीद जजेस को, जो भी जज इस प्रोसेस से गुजर कर आएगा, क्योंकि सारे सीनियर जजेस हैं, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनके जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होंगे और उनकी बाकी चीज़ें भी देखी जाएंगी। तो जब आप उस कमेटी से निकल के और फिर उस पे ओहदे पे तैनात होंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है उसमें उनका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा और साथ ही साथ जो इनकी क्रेडिबिलिटी है और उनको जो है ना वो किसी भी तरीके से बायस नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। और अभी चंद ही घंटों में जो है वो आवाम के सामने उसका नाम भी आ जाएगा, हम सबके सामने, मीडिया पे भी और हर जगह। तो मुझे लगता है ये मजीद बेहतर होगा और जस्टिस का निज़ाम मजबूत होगा। अच्छा, इससे पहले किरण साहिबा आपकी जानिब, सालिद हाफिज साहब, नॉर्मली ये होता है कि आर्मी में जब भी किसी जूनियर जनरल को प्रमोट करके किया जाता है, चीफ ऑफ आर्मी साहब जो सुपरसीड होते हैं वो ऑटोमेटिकली घर चले जाते हैं। वो एक रिवायत है, मतलब कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर ना भी चाहें तो ना जाएं, लेकिन मतलब यहाँ तो वो फार्मूला अप्लाई नहीं होता ना वैसे। नहीं, यहाँ फार्मूला वो अप्लाई होना नहीं चाहिए, होता नहीं बस, क्योंकि आर्मी में देखिए ना, बात यह है कि आर्मी में जब कमांड आपके जूनियर के पास आ जाए, आप उसको ओबे करना है, उसको सल्यूट करना है, उसके हर हुक्म की तामील करनी है। कल तक आप जिसको हुक्म दे रहे थे आज उससे आप हुक्म लेंगे, तो या वो मामला ये अननेचुरल सा हो जाता है। यहाँ पर जजेस आपस में कुलीग होते हैं, बेहतर होगा कि जजेस जो हैं वो जिंदा रहे और जिंदा रहना सीखे, ये ज्यादा अच्छा तरीका होगा। ठीक, किरण डार साहिबा, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि अब आप जब ये